एंड थैंकफुली दिस ईयर NIID हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड कि अगर आप फर्स्ट लिस्ट में एम्बेसी ट्रैक के नहीं सेलेक्ट होते हैं, you will be still eligible to send your documents to that particular university via university track and try कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं ये स्कॉलरशिप विन करने के लिए. तो वही मैंने किया. मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वापस से एक सेट में, यूनिवर्सिटी यू हैव टू सेंड जस्ट वन सेट, सिंगल सेट में रेडी किए एंड आई सेंड इट टू दैट फर्स्ट यूनिवर्सिटी. वो 3 में से जो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट की थी उनको मैंने अपना डॉक्यूमेंट सारा सेंड कर दिया. द नेक्स्ट steps that I will be explaining are only pertaining to the university track. तो उसके बाद जब यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी सेट्स अ डेडलाइन एंड देन NIID सेट्स अ डेडलाइन फॉर यूनिवर्सिटी टू सेंड द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स टू NIID, राइट. तो इसके बीच का जो प्रोसेस है वो है कि आपने जब डॉक्यूमेंट भेजे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे. अगर कोई चेंजेस चाहिए डॉक्यूमेंट में, दे आर विलिंग टू सेंड एन ईमेल टू यू टू लेट यू नो कि ये स्मॉल चेंज है जो आप कर सकते हैं, और आप हमें वापस से डॉक्यूमेंट भेजिए और हम उसको फिर से चेक करेंगे वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट. सो मेरे साथ जो सेकंड स्टोरी टाइम हुई है वो ये है कि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज दिया था तब जो मेरा डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट था those were only notarized. I would recommend reaching out to the university and asking them. कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल फॉर्म में रिक्वायरमेंट रखती है. फॉर इंस्टेंस कि जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उनको डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टल ही चाहिए थे. सो दे रीच आउट टू मी, दे वर लाइक यू हैव सेंड द नोटराइज्ड वर्जन बिफोर दिस डेट. नाउ दे गेव मी अ new extended date which was still before the deadline NIID had given the university कि आप विद इन 5 days मुझे वापस से अपोस्टल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए. बट अपोस्टलाइजेशन ऑलरेडी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ड्यू टू दी होल पैंडमिक सिचुएशन प्रोसेस काफ़ी स्लो था इंडिया में. तो मैंने उनसे 2-3 दिन एक्स्ट्रा मांगे. आई गॉट द डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल्ड एंड देन आई सेंट अनदर कॉपी. तो इस सब का झंझट छोड़ के इफ़ यू जस्ट वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड, गेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपोस्टल बिकॉज फॉर वीज़ा यू वुड नीड दैट. But if you still want to save a little bit of money because apostillization is expensive, then reach out to your university, and if they are okay with notarization, you can feel free to send the notarized version of your documents. Okay. So now when you have sent those things, they will check it. They will then send you an email with the interview slot. They will let you know you have on this specific date and specific time you have this interview, and the next thing is the actual interview itself. So I have multiple questions which were asked to me and my scholar friends during their interviews. If you are interested, I can share those with you in a video as well. So just let me know. Okay. So मेरे इंटरव्यू के टाइम पे 15 minutes पहले और समथिंग लाइक दैट एक कोऑर्डिनेटर ने ज्वाइन द कॉल. ही जस्ट चेक्ड कि एनवायरनमेंट इज़ ओके, माई वॉइस इज़ ओके, इज़ देयर अ डिले एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वंस शी हैज़ चेक्ड एवरीथिंग, we disconnected the call and I was ready for the actual interview. तो ये होने वाला है आपके साथ भी. And once you are done with the interview, your documents will now be sent to NIID. Your university, sometimes they do, sometimes they don't. My university did. They let us know कि you are true with the interview, you passed the interview, and now your documents will be sent to NIID for the next selection process. So देर वर स्कॉलर्स जो जिनके यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ नहीं बताई थी एंड दे वर मोर एंक्शियस दैन अस कि हमारा सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं भी कि नहीं. तो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली. नाउ यू कैन डू नथिंग. यू आर डन विद एवरीथिंग यू कुड हैव डन टू गेट द स्कॉलरशिप. नाउ यू हैव टू वेट and NIID will go through your documents and everything and see whether you are a good candidate to get the scholarship. So this wait time is the worst, I would say, the most anxious time that I had, the first list, before the first list. And I would only say that patience is the key. Please be patient. मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है, मैं खुद नहीं थी. we used to have group chats and we used to talk to each other, कब जाके list आएगा, I'm so anxious, I just want to know the result. But this kind of phases would come a lot in the GKS process. So whenever if you're interested in applying for any scholarship, I would say it always takes 6 months to a year to get the actual result and to be sure that you have got the scholarship. So be patient. This is a very lengthy process and you have to be patient. Yeah. Once the list is out, you are required to go through a medical test. This medical test is particularly to
understand your health condition, to make sure that you are fit enough, healthy enough to complete the entire course of your scholarship. Once the medical test is done, we were asked to send the soft copy. They have a predefined email format. They will give you all the instructions how you have to send the soft copy. Once you have sent that in, again the void time starts. You have to wait. There's this void in your life where you're just waiting for the next list, and that would be the final list of students who are coming to Korea. Once the second list is announced, I think for us it was 28th of June 2021. Once the list was announced, after 3 days, I got the invitation letter from NIID, and post that the coordinator from my language institute started contacting us with all the documents needed for visa and the ticket confirmation and all of that. So once you have the final list out, once you have the invitation letter in your hand, you can start your visa process, your tickets, your visa process. Once everything is done, you just have to get into the flight and come to Korea. So yeah, that was the entire process, start to finish. What happened, what you can expect, things that can be surprising sometimes, so be ready. There can be some surprises, and you have to be very proactive in fulfilling those requirements as and when needed. I hope for the next batch there is no quarantine. All of this is already over, but if there is, then you will be provided a place to stay and all of that by NIID. So rest assured, NIID makes sure that your process is very smooth. You get everything that you need. Your coordinators are available all the time. I would suggest, before you get the first list, whatever the process is, try to search the answers yourself. Try to find information from YouTube, internet, previous year scholars. Try to reach out to them, और वो आपको help करेंगे definitely. Everyone will try to help you and give you the information. But I hope मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये हेल्पफुल हो आपके लिए, जो कमिंग एप्लीकेशंस हैं जो अभी ओपन होंगे, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट्स. आई थिंक फॉर अंडर ग्रेड द प्रोसेस कुड बी स्लाइटली डिफरेंट, बट कुछ स्टेजेस हैं जो सिमिलर रहेंगे. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या हेल्पफुल था, क्या नहीं था. और इवन दो यू आर वॉचिंग आफ्टर योर एप्लीकेशंस आर डन एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द फर्स्ट लिस्ट, तब भी मुझे बताना कि क्या क्या चीज़ें सिमिलर हुई थी आपके प्रोसेस में. And I'll see you in the next video.